See, market will always be ahead of the actual GDP. It's because investors look for opportunities before they are actually available. Investors को हम यही कहेंगे कि जब आप सेक्टर के बारे में सोचते हो, आप उसी तरह का एवोल्यूशन सोचिए जो आपने बैंकिंग में देखा, हेल्थ केयर में देखा, फार्मा में देखा, कुछ हद तक आपने कंजम्पशन में देखा. This theme can undergo that. People शायद थोड़ा ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में कि we are the only country in this pack when the government debt to GDP ratio is not just the lowest among all of, but actually is receding. कोई एआई थीम के ऊपर जा रहा है, कोई ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जा रहा है. ऐसे वक्त में आपका एक ट्रेडिशनल थीम लेकर आना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लेकर आना अपने आप में इट्स अ बोल्ड मूव. आपने जो अभी थीम्स के नाम लिए, करेक्ट, उसमें बेस क्या है? आपने एआई बोला, एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. दूसरा आपने क्या कहा? ग्रीन एनर्जी. उसके लिए आपको क्या चाहिए? सोलर, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड फॉर दैट. जो थीम्स आप कह रहे हो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर. देयर इज दिस न्यू एज व्हिच इज कमिंग अप, right, on infrastructure. सबसे पहले आज जो एनएफओ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, राइट. इंफ्रा के बारे में जब लोग बात करते हैं यूजुअली दे थिंक इंफ्रा मतलब है कि बिल्डिंग्स बनाना, इंफ्रा का मतलब है रोड्स बनाना, थोड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना, ये उनके लिए इंफ्रा का एक ब्रॉड मीनिंग आता है. करेक्ट. बट जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी टाइप की कंपनीज हैं और क्या क्या वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम रियली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं व्हेन वी लुक एट इंफ्रा. बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं तो, और वो गलत नहीं है लोगों का सोच, क्योंकि जो वो इमेजिन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में इमेजिन कर सकते हो जो आपको दिखता है. राइट. आपको बिल्डिंग्स दिखती है, आपको पोर्ट्स दिखते हैं, आपको रोडवेज दिखते हैं, आपको रेल नेटवर्क दिखेगा, आपको हाईवेज दिखेगा. राइट. उसके बियॉन्ड जब आपको इमेजिन करना होता है आप शायद उत हद तक नहीं कर पाते क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में बहुत ईजीली अवेलेबल नहीं है. राइट. और उसके बारे में दिखता नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं कहूँ कि वी आर नाउ इंडिया, जो एआई बूम जो चल रहा है ग्लोबली, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डेटा सेंटर्स. करेक्ट. राइट. अब डेटा सेंटर्स में जितना ग्रोथ होगा, जितनी लागत से वो चीज़ें बनेंगी, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगेंगी, ये जब तक हो नहीं जाता है एंटायरली, कुछ शहरों में तो हो रहा है लेकिन वो आम तरह से दिखता नहीं है, इसलिए लोग उसके बारे में सोच नहीं पाते. राइट. द मोमेंट वो दिखना शुरू हो जाएगा तब आदमी रियलाइज करेगा कि हाँ, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है. जैसे एक चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में जो अब वो थोड़ा थोड़ा उसको इमेजिन करते हैं, विच इज़ लॉजिस्टिक्स. राइट. बिकॉज पहले लॉजिस्टिक्स वॉज हैवी ड्यूटी. ओके. राइट. विच वॉज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज कि इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से भी मूवमेंट हो रहा है. Warehouses capacities have changed. They've become more better. Some of them are air conditioned, right? To preserve food and all of that. Very important. दूसरा चीज़ they've realized that because the highway network का जो काम चला है has happened with such speed now, and the cementing of the road and everything, it has cut down the travel time. Right? Even on the freight travel, जो आप कोयला ले जा रहे हो, गुड्स ले जा रहे हो, they used to operate at about 20-25 kilometers per hour speed. Today they are operating almost 37-38 kilometers per hour speed. So adding 10 kilometers an hour speed to a freight network train changes a lot more. Right. Your inventory capacity you can reduce because then you can get something quicker. Trucks, everything don't have to wait for such a long point of time. You can move out very quickly. So these are things where some of that is now visible. Correct. But there are a lot more sectors which are upcoming जो शायद आसानी से दिखते नहीं है, इसलिए वो विजन नहीं है. So overall जब आप इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, you are actually investing in the growth of a country. Can we say that? Yes, absolutely. All right. अब इसके अंदर जैसे आपने कहा कि पहले लोग इस तरह से सोचते थे, आज इस तरह से सोच रहे हैं, राइट. तो क्या मेजर चेंजेस आए हैं ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर और आज जो आपको दिख रहा है उसके अंदर?
चेंजेस काफ़ी सारे हैं. फॉर एग्जांपल अगर 2015-10 साल पहले भी अगर आप बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स का कॉम्पोजिशन अगर देखें और आज देखें तो पहले एविएशन वाज नॉट सो मच देयर. आपके पास और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो पावर सेक्टर टाइप्स है राइट, दोज वर हेवी. उसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन एंगल आ गया है. पहले इट वाज ओनली जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो थिंग्स हैव चेंज्ड टू दैट एक्सटेंट. Capital goods companies which are into construction was not that many. Now they have increased. Okay. So things have started changing. Now the newer infrastructure story which is evolving, which is your data centers, your semiconductor facility manufacturing, your EMS sectors. Now these are all which are upcoming. और क्या होता है ना, जब आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से जब आप देखते हो इन चीज़ों को, तो ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो आती है कैपिटलाइजेशन में, वो आती है उस समय जब ये सब चीज़ें डिस्कस करनी शुरू हो जाती हैं. सी मार्केट विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ द एक्चुअल जीडीपी. राइट. इट्स बिकॉज इन्वेस्टर्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज बिफोर दे आर एक्चुअली अवेलेबल. Right? So if there is a formalization which has happened, government ने कुछ policy announce करी है, तो you start seeing the impacts of that, effects of that immediately. And it's after a point of time when the actual facilities and all will match up. Right? So now we are in that space where lot of policy measures already announced हो गए हैं. Okay. Right? Government से अगर आप देखोगे उड़ान स्कीम, Bharatmala project, Sagarmala project. Correct. So many, even in the PLI manufacturing side, so many things have been announced. The movement has started over the last 3-4 years. It could have happened earlier, but for COVID it sort of got derailed. But now you're seeing that catch up. So as an investor point of view, because your first question was also on that line, that as an investor, why I am not able to see that opportunity? Correct. It's because at some times we are only waiting for cues कि actually क्या हो रहा है. Right. ग्राउंड पे दिखता है तो मैं करूँगा. तो जो ग्राउंड पे जब दिखेगा और उसके बाद जो होगा, आपको शायद जो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा. बट अगर आप एक्सेलरेटेड वे ऑफ ग्रोथ में चाहते हो देखना, तो सम अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू कैच ऑन लिटिल अर्लियर. Okay. That's the mindset change I think an investor should bring in whenever he's looking at any, forget about infrastructure, even looking at any theme. Right? Now I'll give you an example. आज से मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले अगर आप FSI मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर क्या होता था? बैंकिंग ही था. Banks. Correct. बैंक ही था. Right. There was nothing which was beyond it. Correct. Then that expanded to broking, that expanded to capital markets, that expanded to your securities, digital securities firms, companies, correct. payment gateways, everything. Like it has completely expanded. That every subsector has 3-4 subsectors. Right. Correct. Same thing. Look at healthcare. Healthcare was only about pharmaceuticals. Pharma company. Correct. Now it has evolved to hospitals, diagnostic chains, Okay. Labs, Supplements, wellness. wellness. Correct. So people have seen those two sectors change Right. and they can feel it. I think similarly infrastructure will go a similar story where today what they envision is a distance past of 2007-8 when infra story was at its boom, and probably it was led by reality largely. रियल एस्टेट कंपनीज जो थी उससे वो ज़्यादा एक प्रभाव था उस चीज़ का. Correct. एंड देन दैट साइकिल डिडंट डू फॉर मेनी ईयर्स. Right. So it sort of went at the back burner for people. But over the last few years, with government push, I think there will be an evolution of this sector. So investors को हम यही कहेंगे कि जब आप इस सेक्टर के बारे में सोचते हो, आप उसी तरह का एवोल्यूशन सोचिए जो आपने बैंकिंग में देखा, जो आपने हेल्थ केयर में देखा, फार्मा में देखा, या कुछ हद तक आपने कंजम्पशन में देखा.
because the bouquet also became very large. Right. So this theme can undergo that, and we have not even discussed the impact of defense on infrastructure. ट्रू सर, आपने गवर्नमेंट की बात की, आपने थीम्स वगैरह की बात की, उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई नाउ, मतलब आप ये जो एनएफओ इंफ्रा वाला लेकर आ रहे हैं 2020 ऑलमोस्ट 2026 है अब। अगर गवर्नमेंट की ही बात करूं और कैपेक्स की बात करूं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो करंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है टू इन द कैपेक्स एंड इन द इंफ्रा डेवलपमेंट। उनका जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आया था तब वो मोटिव यही था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, वो उनका टॉपिक था। आज भले ही थोड़ा चेंज हो गया, बट ठीक है, वी बिलीव कि वो ऐसा ही है। और हमने देखा भी, आपने सब पोस्ट कोविड की बात की, तो पोस्ट कोविड के बाद रियलिटी सेक्टर के अंदर बूम आया था। निफ्टी रियलिटी में भी काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड आया था। निफ्टी जो इंफ्रा है उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक मूवमेंट हमको देखने मिला था, बुल रन देखने मिला था। लास्ट 2-2.5 सालों से वो बुल रन अब कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है। एंड सेम इज़ हैपनिंग इन द पावर यूटिलिटी सेक्टर, सेम इज़ हैपनिंग इन द स्टील जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर। तो जब इस गवर्नमेंट को ऑलरेडी अभी तीसरा टर्म इनका चल रहा है, इस वक्त इसका लाने का, जैसा आपने कहा कि अर्ली मूवर जो एडवांटेज हमें मिल सकता है, क्या ये एडवांटेज हमें अभी भी मिल सकता है? आई थिंक आपके क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस है, so let me Oh, yeah, answer please, please. from that perspective, right? अगर जो ऑडियंस ये देखेगा, अगर वो मुंबई से हैं, अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे. Correct. सम ऑफ देम आर येट टू बी डिलीवर्ड, बट द वर्क इज ऑन, Yes. right? Ocean Road got completed, your Eastern Freeway came up, metro lines are now Underground metros operational, and, yeah. underground is operational. So you've seen many changes which have happened, and that cannot happen without, say, continuity. Second, the will to do it. अक्रॉस द कंट्री अगर आप बात करोगे तो बहुत लोगों ने हाईवेज चेंज होते हुए देखे हैं, राइट? द कनेक्टिविटीज हैव इम्प्रूव्ड. Okay. Number of airports in the country. Yeah. There is one statistic. While we can talk about number of airports, let me give you one statistic. Today, you can land at an airport in India under 15 minutes. Okay. Which was, if you're in the air and if say खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है, 15 मिनट में आप लैंड कर जाओगे. Which almost 15-20 years back was a good half an hour to 40 minutes. Okay. Right? So that is the number of airports which have come up wherever you're flying That's a in interesting the data. country. Yeah. Right? So these are things which probably data don't tell you. Okay. These are certain insights when you're having a conversation with somebody who's in that sector will be able to tell you. So part B of your question was that emphasis of infrastructure today compared to, say, last, say, 5 years back or 10 years back. Yeah. So what we have seen ki public capex is there. It's been there as a part of it. But now going ahead, between FY26 to FY32, the next 6 years, we're almost talking about $150-160 billion of capex inputs under the various infrastructure subsectors. That's a huge leg up to what we have spent earlier. And again, if you look at the private capex cycle, we had touched a low of sub 20% during COVID. It's already back at about 26-27%. It's expected to now touch 35-36%. Okay. Now, so government can give you one capex utilization, right? But जो उसकी ancillary, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ से जो जॉब क्रिएशन होगा, वहाँ से जो लोगों को और दिखना शुरू होगा, ये तभी होगा जब प्राइवेट पब्लिक बोथ पार्टिसिपेट. Right? Just government, I think government was doing it for since India got independence, right? But it's only when private sector started participating in it, you started seeing the real result of it. Okay. So I think we are in that phase. Coming to third, in terms of what can happen today, is today we are at a cusp where government has come and given
so many different incentives. They have come out and announced so many schemes. But we sort of did not go that line because we got plagued by COVID for about 2-3 years. Yeah. After that, now is the time when you see, now if you see your interest rates have been brought down ahead of its time. 100 basis point cut given by RBI before, interventions over a period of time. All other central banks are doing it phase wise. We said no, give it at once because that's how you can propel. Second, I think something very important happened just before COVID, but हम भूल जाते हैं, is about introduction of the lower corporate tax rates. Right. Right? For the low, I mean, from a startup company point of view, we are as good as Singapore today. Right? Okay. Now that never came into play Because of the COVID. because of COVID, and then post that, people, what started happening across the world in terms of wars and all of it. So we are now that all those things are settled. So we can find opportunities where we are already seeing the private capex started to go up. Right. And that's a point where people will take advantage. Ansh, one more thing very important with people, शायद थोड़ा ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में, कि we are the only country in this pack when the government debt to GDP ratio is not just the lowest among all of them, but actually is receding. Okay. And that has not happened with any other country post-COVID. गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर. The amount of, so every country will spend something to get its entire economy to move. Correct. Right? So for which the government has to undertake a lot more debt than it intends to. Right. But because of our fiscal prudent measures that we have been incorporating, and largely led with oil and gas, Okay. because that's a huge component for us, we as a country have been able to keep that in check and actually now in a much better position where the other countries are. Okay. So we can prioritize on other spendings rather than just footing our oil and gas bills and all of that. Right. So even on defense, I think that's a second important thing because you tend to import now in this whole whatever we have seen in the last 3 years across the world. You wanted to have more of security around, right? Right. तो उसके लिए बहुत सारी countries do spend a lot of defense spending, Right. which is heavy equipment. It costs a hole into your Thousands of finances. crore for Yeah, some yeah, one it'll- small thing. हाँ. पर अगर आप इंडिया को देखो तो what we have done smartly is while we have bought from outside, we have tried to do our own जुगाड़ on it. Correct. Right? और वहाँ से आपको मतलब I think the last conflict in May really gave a great picture to the world that how good we are in terms of our own companies on defense. So put all of this together, we have been able to keep our debt in check, which gives us leeway to the government to do other projects, to divert that money to something which is much more worthwhile to take the country upwards. Okay. And that's an opportunity where now private has come in. We are able to see those things which can really help from an infrastructure point of view. गॉट इट सर. एंड ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि पीपल आर फोकसिंग अ लॉट ऑन डिफरेंट थीम्स ऑफ द मार्केट. कोई एआई थीम के ऊपर जा रहा है, कोई ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जा रहा है. उस वक्त ऐसे वक्त में आपका एक ट्रेडिशनल थीम लेकर आना कि इंफ्रास्ट्रक्चर राइट, वो लेकर आना अपने आप में इट्स अ बोल्ड मूव. बट जैसा कि आपने कहा कि इंफ्रा इज नॉट जस्ट योर बिल्डिंग्स एंड रोड्स, इट इज अगेन पुटिंग द मनी इनटू डेटा सेंटर्स एंड इन द एनर्जी, जो कि ग्रीन एनर्जी भी बजाती है. ग्रेट. कहना है मैं उसका एक छोटा सा जवाब दे दूं. श्योर प्लीज सर. आपने जो अभी थीम्स के नाम लिए, करेक्ट, उसमें बेस क्या है? बेस से आपने एआई बोला जी, तो एआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा सेंटर्स. इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स. करेक्ट. राइट. पावर. यस. करेक्ट. ओके. दूसरा आपने क्या कहा? ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी. उसके लिए आपको क्या चाहिए? Again, सोलर wind, yes. Ground support, right? Land, actual infrastructure to be built for that. Right. I'll expand that further for your
Ethanol is another example. Yeah, but that is not, I won't say it like a comparable thing. I'm Okay. just giving you from a base level point of view. आप कंजम्पशन बात करोगे अगर, Right. तो जो भी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगेन यू नीड बेस लेवल रोड्स, Right. कनेक्टिविटी, करेक्ट. अगर आप हेल्थ केयर बात करोगे तो आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो, तो बिल्डिंग की बात कर रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हो. Right. सो जो थीम्स आप कह रहे हो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर. Got it, sir. अब इंफ्रा एज अ थीम तो समझ में आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द फंड. या राइट, फंड की बात करें तो इट्स एन एक्टिव फंड एंड आप, मैं जब उसका डॉक्यूमेंट्स के पढ़ रहा था तो उसमें है कि यू आर गोइंग टू सेलेक्ट लाइक 40 to 50 स्टॉक्स. उसका एक आप एक अपना बास्केट बना के उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे. सो वो जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो जी. किस क्राइटेरिया पे होगा? क्या वो चीज़ें हैं जो आप एक कंपनी के अंदर देखेंगे, और किस किस इंडस्ट्री से वो और किस किस सेक्टर से वो पर्टिकुलर कंपनीज आएगी? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. Great. So the manager for this fund is Bharti Sawant, who is Okay. looking into this. In fact, she's been tracking these subsectors for quite some time on this specific theme. Now, when we are looking at the opportunities जो available हैं आज, तो तीन पार्ट है basically. एक है जो there is this new age which is coming up, right, on infrastructure. So we are going to look at it as part of the core theme. Okay. Okay. Now this will be supported by the traditional sort of or infrastructure which has been there part of the index for quite some time. ये यहाँ से आपको कैश फ्लो आएगा, Okay. which basically gives you portfolio stability, Right. right? And then you will have satellite opportunities which will come from some of these themes and sectors which are emerging but may be expensive Okay. at this moment, right? So when we look at it, the portfolio will definitely have like a barbell strategy, which will be between new age, say the core infrastructure, and then a satellite portion on it. Babel, if I'm not sure whether maybe we can spend a minute to explain to people. Definitely. Babel कुछ नहीं होता, basically it's about balancing weights into different. The workout वाला bubble. Yeah, similar to that. So basically a workout barbell अगर हम उसका example ले, तो weights are on two sides, Right. and then you have a rod which connects both of them. Right. Expanded version of that is your train set of wheels, right? शायद कोई ये सोचता नहीं उसका इतने बारे में कि जब ट्रेन सेट ऑफ व्हील्स जो है ना वो थोड़े से Tilted type होते हाँ हैं. बट कॉन्वेक्स टाइप होते हैं. Right. दे आर नॉट फ्लैट, right? They are a little, there's an inner ring which is bigger and outer ring which is slightly smaller. Correct. Right? And the reason for that is when, say, you take a turn, if the wheel set is flat, It'll just derail. Right? it'll derail. But because of the way it is, it balances out the impact. Correct. So that's why even on high speeds you don't get that knee-jerk reaction or a derailment which happens. I mean, of course, there are sometimes certain accidents which happen, which is unfortunate, but largely it's designed in a way to keep it rolling at high speed without much of displacement. Right? Okay. Now that concept is borrowed from there, and it's put largely in the debt funds. बाबल स्ट्रैटेजी डेट फंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वहाँ पे आप जब ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, तब हम उसको कहते हैं कि अगर आपका 7 साल का ड्यूरेशन पीरियड है तो देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ द फंड्स विच विल बाय इनटू सर्टेन debt which is maturing at a certain point of time, and then you will buy a chunk of debt which will mature slightly lesser point of time, so that you can manage the liquidity of the portfolio. And that's because it is like portfolio is percentages here, and that's why you connect it in a certain way. That's called a barbell strategy. Okay. Now that's an apt example to explain barbell strategy from a debt Layman's fund. perspective, Yeah, from a layman's perspective. Equity funds में उसका इस्तेमाल
would be to balance out the portfolio risk. Balance out मतलब like you'll be having a balance of some steady and traditional firms Correct. and then the new age firms जिसके अंदर high growth opportunities, Yes. something like Absolutely. Absolutely. Because then you can't play a high risk, reward game all the time. So अगर ये खाली से इंडेक्स होता, अगर आप इंडेक्स कॉम्पोजिशन की पे अगर बात करोगे, it is made up of so many different sectors. It can't just be heavy on a certain sector, that. Right. right? And those things have happened in the past when the index has been heavy on a certain sector, and that sector for some reason doesn't do well. So Nifty, for example, is very heavy on IT and banks. Correct. Right. But still, it is not. I don't think anything is more than 50%. Yeah. Right. थीम्स में वो एक रिस्क आ जाता है बहुत बार कि आप अंडरलाइंग जो वेट्स है उसके विपरीत अगर आप कुछ काम करोगे, आप हैवी हो जाओगे ऑन अ सर्टेन वे, देन योर जब आप वेट उठाओगे तो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा. Correct. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव एन अप्रोच व्हिच इज मोर डाइवर्सिफाइड. एंड इसके लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अंडरलाइन जब बेंचमार्क देखोगे, उसके वेट्स अगर आप देखोगे, तो इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना ओवरवेट रहना है, कितना अंडरवेट रहना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिस्क एलिमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो. Okay. देखिए, जब आप कोई कहता है ना कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है कि आप कम रिस्क लेते हुए कि अच्छा रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हो. Absolutely. बिकॉज आप ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न तो दे ही सकते हो. Correct. राइट. बट देन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क विल गो अप. Right. So especially when it comes to thematic funds, where you have to be even more cautious, while it's something which is upcoming, new themes, not infra, but some of the other themes which are new age, upcoming. Um, again, can you play it out? I think that's one of the reason why I always believe कि अगर आपका कोई brash new theme है, it just got announced and there is a index which has come up on it, it's better you play the index, Okay. right? Because in selection you can probably go wrong, But what if you miss out on something great, some great opportunity? but it will be very time short because things will catch up. Okay. So if you're a long term investor who's coming in that 5 year I want to give money, right, or 10 year I want to give money, then I think it's very important that you have a balance of say a manager selection and say a core which is there already. But for a brash new theme, you can look at just the index because everything is evolving. Right. So you don't know what will happen. But for something which has been there for many years, infra as a theme, people are aware of. Correct. It's just that there are now new things which are coming up into it. वो इंडेक्स में इतना अच्छे से अभी तक रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं है. So a manager can do much more better job in identifying that and having exposure to that to give you a better flavor of what otherwise you would have just got from an index. ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क्स, उसकी बात भी कर लेते हैं कि जब भी हम किसी थीम की बात करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर की बात करते हैं, और उसकी जब उसका एक पर्टिकुलर जो फंड आता है, उस फंड के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर वो सेक्टर बिगड़ा तो फंड भी जाएगा. भले ही इफ़ यू हैव सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स और सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, जब आपकी सेक्टर, आपका इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो आपके स्टॉक्स और आपका फंड भी परफॉर्म नहीं कर पाता. बिल्कुल. तो ऐसे कौन से रिस्क हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रा सेक्टर को लेकर और इस फंड को लेकर? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. So again a very good question कि when it comes to thematic investing, रिस्क का कितना बड़ा महत्व है. करेक्ट. अब थीम्स देखिए, एक तो पहला चीज़ है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड थीम. ओके. राइट. सेक्टर होता है तब जब देर इज ओनली अ सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन, लाइक अ फार्मास्यूटिकल इज अ सेक्टर, हेल्थ केयर इज अ थीम, FMCG is a sector, consumerism is a theme. Right. Bank is a sector, but banking and financial services is a theme. So, moment there are more allied services to it,
there are more ancillary businesses to it. It will start expanding into a theme. Okay. Real estate is a sector. Yeah. Infra is a theme. Defense is a sector, right? But that, when its baseline is added to the infra, it becomes a part of the infra theme, Yes. right? So that way, the risk of a sectoral fund, I would say, is slightly ahead of a risk of a thematic fund. Okay. So at the core, थीम के कोर में सेक्टर है, हाँ. लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो उसके वजह से वो थीम को ऑलरेडी उसका रिस्क एलिमेंट कंपेयर टू इट्स ओन कोर सेक्टर कम कर देता है. Internal diversification जैसे. एग्जैक्टली. Okay. And subsectors. So it's for example, because you mentioned about real estate, right? It's about then exposure only to that sector and those listed space. देखिए हम actual building में तो participate नहीं कर रहे हैं, Right. right? उसके जो listed stocks हैं capital market में, हम उसमें exposure ले रहे हैं. Right. So even if a project say goes bad for it, from a listed perspective, it may have hundreds of projects in that is one say bad project, right? But the owner of that real estate house or whatever he's invested in that particular project, Correct. he may be affected, but the business at large will not be affected. So the difference between doing investment in the stock market and then say doing into a real estate, there's a big difference of the same stock, Right. right? So from a fund manager's perspective, he's looking at the capital market. He's looking at opportunities which are coming up, which will have an impact on the price, whether positively or negatively, and then decide whether he should buy or he will not buy. Now, compared to your question on from a risk element today, I'll couple it with why somebody should look at infrastructure from a today's lens perspective. Okay. Right? I think things have become slightly easier for the real estate companies also to borrow money as compared to other. I think RERA has had a very big impact. Yeah. Right? तो जब आपका, मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इट्स इजीली अंडरस्टूड बाय पीपल, राइट? हालांकि इसमें हमारे फंड्स में वॉट एवर रियल एस्टेट एंड ऑल द एक्चुअल रियलिटी एक्सपोजर विल बी लिमिटेड टू बिगिन विद. सो आप जितनी बार रियल एस्टेट बोल रहे हैं मुझे बॉम्बे का रियल एस्टेट याद आ रहा है एंड वहाँ मुझे दिखता है कि प्राइसेस आर ओवर इन्फ्लेटेड. तो और वो मेरे लिए वो रिस्क की डेफिनेशन और ज़्यादा बढ़ा रहा है. सो या जस्ट नीड क्लैरिटी फ्रॉम यू ऑन दैट. So I'm not a real estate expert per se, but every city will have its own cycle. Correct. Right? So from infrastructure of a city and the real estate prices are inversely correlated. Okay. If you have great infrastructure, prices I don't think will rise that much. Of real estate. Real estate. Okay. Because then now you're paying premium to stay closer to your workplace. Right? Right. But if the infrastructure of the city is very good, and this happens across the world, metropolis में सब जगह होता है, तो अगर आपका infrastructure of the city is very well, कि अगर आप आधा घंटा भी दूर रहो, but you have a good connectivity, then you will prefer to stay Right. there. True. Right? So now, from a price point, I am not an expert, but prices that way have remained a little inflated in the city. See, I'll give you a thumb rule. What I heard from some expert some time back is कि अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस करेक्शन हो रहा है तो आप शहर में इन्वेस्ट करिए. ओके. लेकिन अगर प्राइस अप्रिसिएशन मोड में है तो आप शहर के पेरिफेरी में इन्वेस्ट करिए. Because whenever there will be a rebound, city will rebound first. Okay. Right? Correct. It's a similar to stock market investing. जब आप कहते हैं कि broad market index depressed है, it's corrected. The broad market index will bounce back first. The large caps will bounce back first. Right. Right? But when you are in a cyclical bull run, is when you start thinking that I should look at other things, right? Because those are also doing very well, which we saw in between, say, 21 to 23. 23, yeah. Right? And last 1.5 year, 2 years, large caps have actually done well.
right? It's because of something which got depressed and then on the bounce back that is doing very well, ट्रू right? So while lot of people may think कि वो बुल रन में हमने इन्वेस्ट किया था वो कब आएगा and all of it, but I think if you play it smart, keep moving into different segments, sectors at the right point of time, then it becomes easy for people. But again, that is say 70-75% of your portfolio. ओके At all points of time, you will still have a 25% exposure to say themes, something you are which is non-core. So nobody at this moment is asking कि भैया आप ना उधर से निकल के आप ये themes में पैसा लगाइए. इन themes के बीच में शायद ये एक अच्छी opportunity, ओके right? Nobody's saying compromise, oh, let go your 25% there, make it 50, bring that 25% here. No. Whatever you are intending to put in that 25% of your satellite, which is comprising of themes, you can look at infrastructure as an opportunity to. And think from an opportunity which will be there for the next 6-7 years when Okay. so much money is going in the infrastructure theme in the country. राइट सो इसी को थोड़ा एक्सपैंड और कर देते हैं क्वेश्चन को कि ये जो आपका नया फंड आ रहा है और इंफ्रा जो थीम है वो अपने आप में किन इन्वेस्टर्स के लिए है और किसके लिए नहीं है Okay. मतलब सबसे सूटेबल आपके प्रॉस्पेक्ट्स कौन है और कौन है जिसको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए देखिए एज ए इन्वेस्टर इवन जब मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तब सबसे पहली चीज़ें तो यही होती है कि मुझे समझ में आती है कि जो मुझे दिखता है जो आई कैन ईजीली रेजोनेट विथ राइट एंड आई गिव एन एग्जांपल लाइक ईवी राइट 5 years back when people were talking about EV, I don't think anybody was taking it seriously. या Today you're out on the street, you're seeing the cars. राइट So now you think, okay, fine. I mean, this is a reality. Now, can I still invest? Can I take that opportunity and say capitalize on the next 10 years of movement which will happen in this? Best point of investment maybe was 5 years back ट्रू in the sector. Yeah. And we are not talking about a particular stock price movement or anything, right? We're just talking about as a sector evolution, as a theme evolution. Most comfortable would have been 5 years back. करेक्ट But we are not in a bad phase today. It's not that it's overpriced. Everything has been explored. Now the new would be some other technology change. वो phase में नहीं है हम अभी, राइट right? So similarly for say infra as a theme, I'm already seeing it. Now I've started feeling it that it is there. या Maybe everything is not there in what I can see, but allied में तो बहुत सारा है. मेरे को उसकी benefits मिल रही हैं. राइट अब हम कह रहे हैं कि इसमें और भी एवोल्यूशन होगा. सो आई कैन देन डेफिनेटली टेक सम एक्सपोजर टू दिस ओके and give it a chance rather than say few years down the line where maybe this plays out and then it becomes a mainstay product, ओके right? इसके बहुत सारे सब सेक्टर्स भी इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे एट द ब्रॉडर लेवल. उस समय फिर उसकी अपॉर्चुनिटी जो करने की है वो शायद उतनी नहीं रहेगी जो आज एक अपॉर्चुनिटी शायद है. ठीक है एंड दिस हैज हैपेंड इन एवरी थीम व्हिच यू थिंक सडनली रियलाइजेशन इज कि हाँ ये बड़ा हो गया, राइट? ये True. शायद आज भी बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे जो कहते हैं यार हमारे ज़माने में बहुत छोटा सा होता था, राइट अब तो इसमें जॉब्स भी हैं, ये भी है, मेरा बेटा भी यहाँ काम करता है. गॉट इट एंड उसका आंसर आपने नहीं दिया सर कि हु शुड अवॉइड दिस फंड I think somebody who um, says that I'm okay with not trying to have that vision. Okay. Be whatever is there, I will invest in that. Whatever is visible to me. ओके मैं सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करूँगा. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्क नहीं चाहिए. I am happy with what is available at an index level, whatever available as an opportunity level. And somebody who feels that large cap, mid cap, small cap ही ठीक है. Because फिर क्या होता है ना, जब भी there is a market opportunity, तो questions are मैं large cap लूँ, मैं mid cap लूँ, मैं small cap लूँ.
और उसी में हम बहुत डिस्कशन करते रह जाते हैं. थीम में ये नहीं होता. आप फिर थीम की बात कर रहे हो, whether theme will work or not work, Yeah, true. right? While the theme can have small cap exposure, mid cap exposure, large cap exposure, but we are not getting into that conversation. World has actually moved away from market caps to themes, right? World में discussion on market cap doesn't happen. Not anymore. Not anymore. Okay. While they will have broad indices which are very large and exposures of institutional investors, pension funds, everybody is there. At a retail level, at an individual investor level, he looks for themes. So I think we'll also undergo that cycle very soon where we are not discussing about आज लार्ज कैप अच्छा लगता है या मिड कैप अच्छा लगता है. आई थिंक डेटा ये आपको बताता है कि अगर आप स्मॉल कैप्स में SIPs करते रहोगे, so you will get that kicker more because of rupee cost averaging formula. See, what you need is something to be more volatile, True. right? To For your generate the SIP alpha. to, yeah, for your SIP to work, because you want units which are to be accumulated at lower levels Lower also, price, correct. where volatility is your best friend. But the moment that you start getting into conversations कि large cap है या mid cap है या small cap है, I think वहाँ पे फिर वो limit होना शुरू हो जाता है. But from a theme perspective, I think the opportunities are endless. And to play a theme which is already there in the market but is sort of reforming itself into a new avatar, I think a fund manager can do a much better job. Got it. I think my final question to you for today is we spoke about इंफ्रा सेक्टर. हमने ये पूरे थीम की भी बात कर ली, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रिस्क है, उन सब की बात कर ली, और फंड की भी बात कर ली. बट माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज़ कि वाई मिराई फंड, मिराई एसेट का ही हम फंड क्यों लें? बिकॉज देयर आर मेनी फंड्स इन द मार्केट जो कि एक्टिव हैं और जो कि इंफ्रा थीम के ऊपर काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट यूनिक थिंग दैट इज़ यू दैट सो व्हाट इज़ दैट USP जिसकी वजह से पीपल शुड एक्चुअली कंसिडर मिराइज इंफ्रा फंड? I firmly believe that when you are in fund management, it's about what you have and what you can create, right? So, from a construct point of view, one of the things, and I've been with the firm for 17 years now, Yeah. so I can tell you, हमारे यहाँ जितने thematic के managers हैं, वो पहले analyst रह चुके हैं. Okay. So they've come from that grassroots level. If I have to give that example, right? कि आप वो hard yards करके आप फिर अब आ रहे हो. So there is, in a sense, there is skin in the game of his understanding of all the moving parts within that sectors, right? And then they have graduated to become the managers, and some of them have actually gone ahead and now become not just theme managers but market cap managers also. Okay. I'll give you 3 examples. We launched our consumer fund in 2011. It's probably way ahead of when others have started launching those products. So, consumer fund we launched then, healthcare we launched in 2018, and then around COVID time we launched our banking and financial services product. All 3 products, when we launched the products, the 3-year CAGR is excess of 15%. Okay. From the date of the launch. In fact, from a NAV movement, market cap movement, from a benchmark movement, products have delivered, right? But what I'm saying is, if you have to see that how have you done with vis-a-vis your own theme launches in the past, all 3 products on the date of the launch to its 3-year CAGR is all 15% plus. Some are 17, 16, but all are 15% plus. That tells you that probably we understand the timing of the product slightly better. See, equity में क्या है ना, आप या तो टाइम खरीद सकते हो या प्राइस खरीद सकते हो. प्राइस तो लोगों को मिलता नहीं है. if you could hit it, then you're God. You should not be here. Correct. But then you look at the probable time where you can come, right?
You may get it right, you may get it wrong. But higher chances that you can get it right, Okay. right? Past 3 launches on the active funds of theme launches, we have seen all 3 have delivered. Okay. Which gives us enough confidence that, you know, our policy of selection, a policy of when is the right moment, and to come and talk about it. And we are okay. We are not somebody who chase big AUMs during the launch periods, right? What we are here for is to tell you that there is a good time. We feel that we have conviction that we can do this. In past, we have demonstrated it. Of course, that doesn't mean that ये भी ऐसा ही हो जाएगा, but at least past track record is telling you that we have a knack for getting it right. And again, on the active mutual fund side, we haven't launched too many funds, Yeah. right? We haven't launched so many thematic funds, business sector funds, whatever names they are, because we believe that whatever we've launched is good enough. Passive side में बहुत सारे launches हुए हैं, but that's a different story because it is indexes are available and Yeah. you're just replicating those. Correct. So that's a different story. But here, when it comes to active fund management, this is just our Fourth. thematic launch Right. in 17 years. So last 3 का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि फोर्थ भी कैन बी अ गुड. I mean, we are confident. Yeah. But again, I said, like, you know, it is against the benchmark, what it performs, and you should always judge it against that, and you should give it some time. Abhi, you come in and then start evaluating it 9 months, 10 months, 1 year. I don't think that's healthy. So any product, evaluate from a 5-year horizon, 3-year horizon, which will tell you that, you know, what is the consistency. And one more thing, कोई भी product का track record अगर आपको check करना है, just dissect it from a calendar year perspective Okay. and see how many years it has beaten the benchmark. Right? Don't look at last 5 saal point to point. Look at a calendar year bifurcation and see whether the product has been more consistent in beating its benchmark. Correct. And if you see more consistency in that, because there are many times when products 1-1.5 साल में इतना अल्फा क्रिएट कर दोगे कि 5-10 साल का एवरेज बढ़ जाता है. हाँ एवरेज बढ़ जाता है, राइट? एंड देन यू से व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी. बट some things were not right for 8-9 years. Correct. If you're not able to beat benchmarks consistently. Products which are generally able to do that will tell you that they have a good risk management principle. They have managers who understand how to look at the opportunities and are more consistent in nature. Flash in the pan performance तो फिर flash in the pan performance ही होगा. All right, sir. I think that's all. Thank you so much for giving us your time and being here in the Upsurge podcast. So on the final note, if you want to give any advice that you would like to give to all our investors, we'd be more than happy, sir. Don't look at infrastructure theme as infrastructure. Look at it as infrastructure plus plus. That's it. Infrastructure plus plus, मतलब? Like there are additions to the core infrastructure. Correct. Right. तो सिर्फ इंफ्रा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है. It is much more than that, and it is basically the foundation of all your other themes, जैसा कि आपने जी पॉडकास्ट में कहा था. So thank you so much, sir. And आप सबको कैसा लगा है पूरा का पूरा पॉडकास्ट? Let us know in the comment section below. अगर आपके कोई questions हैं, वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं. And I think sir would help us to answer some questions. happy to do that. Perfect. So yeah, on that note, and by the way, इस पूरे NFO की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, so you can check it out. और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.